Good morning, everyone. I'm going to start chapter 8, the unique world of insects and animals. When you look around you, you will see different types of animals and plants are present. These animals are similar in some of the ways but different from each other in so many ways. All animals they are having their own characteristics. उनका अपना शेप होता है, साइज होता है, हाउ डू दे गेट फूड, how do they move, everything is different from each other. One day, Gudiya, Munia and Raju, they were playing hide and seek. During their game, they lost a coin of 2 rupees, so they have started to look for that. But because it was dark, it was night, so they were not able to find it out. At that time, Raju, he saw a bat. Bat is a type of mammal but looks like a bird because it can easily fly in the sky. So he has seen that at night also it can easily fly and without any obstacle, without stopping. So he was surprised. Then Munia has told that he had read in a book that bat can easily fly in the night, but how? Actually, when bat flies, they used to release a sound, और वो sound आगे that sound is actually with high frequency. So if there is any obstacle in the way, then it used to hit to that and reflect back. Means जब वो ये high frequency की sound release करता है, that sound goes in front. अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, then it goes straight. But if any obstacle is there, suppose wall is there or any other bird or any object is there, तो ये sound उससे उसको hit करती है and will reflect back. वो reflect back हो जाती है and that reflected sound it can be sensed by the bat. तो वो अपना path change कर लेता है. And such type of sounds are called echo, and by sensing these echo it can fly easily. कि अगर कोई obstacle होता है, it used to change its path, otherwise it goes straight. After that, another incident, when Munia and brother Raju they were going to the neighbor's house. So Munia, she get hurt with a stone, and she started to cry and nervous also actually, and was not able to walk. So that everything is because means the pain that she felt, that is because of the nervous system. Later on, they have seen a dog is tied with a chain on the neighbor's door. जो नेबर के वहाँ पे एक जाते हैं, वहाँ पे एक डॉग बंधा हुआ है. And when the dog has seen these brother and sisters, the dog had started to bark. So Raju has explained to Munia कि कैसे डॉग जब किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो वो bark करना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते in their own way. So why is it so? How are they able to identify the known person and started to bark at the strangers? Because they are having a very strong sense of smell. उनकी जो स्मेलिंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. That's why they are able to recognize the known person. And because of the good smelling sense, dogs are trained to work with the police also. So they are able to help police to get the criminal by smelling different things. We are also having good smelling sense but not similar to the dog. Our smelling sense is bit less as compared to the dog, but still in routine whatever things we use, we eat, we are able to get the sense of smell. For example, if your eyes are tied with a piece of cloth, जैसा कि इसमें इंसिडेंट बताया है कि स्कूल में ऐसा इन्होंने किया है जस्ट टू आइडेंटिफाई द सेंस ऑफ स्मेल, कि टीचर कुछ फ्रूट्स लेके आती है और उसके बाद a piece of cloth is tied to some of the students. Later on, they got chance one by one to smell the fruits and later on to identify the name of the fruits. So just imagine
कि आप भी अगर कोई फ्रूट अपने सामने रखो, विदाउट लुकिंग एट द फ्रूट, just by smelling it you are able to identify the fruit. For example, some of the fruits they have really strong smell. Suppose mango अगर घर में है, even when you enter from outside you will be easily to able to identify कि yeah, mangoes are there. Guava, chiku, banana and so many fruits, they have their particular और डिस्टिंक्ट स्मेल, तो जिसे हम स्मेल करके इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है. In the same way, we can identify different types of flowers, soap, perfumes, but salt, sugar, pen, pencil, these we cannot identify. For these, we have to touch. तो कुछ ऑब्जेक्ट को हम स्मेल से पहचान सकते हैं, and some of the objects we can identify by touching these objects. Suppose आपकी आंखें बंद है and you are having different types of objects in front of you, so आप उसको टच करके पता कर सकते हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. Next point is how far can different creatures see. Whatever different types of organisms, animals you just look around you, तो उनकी जो विजन पावर होती है that is different. For example, we used to see with our two eyes, but the image we will get that is in front of us, कि जो हमारे सामने है हम उसको देख सकते हैं. If we want to look at the back, we have to turn our head. But do you know insects like mosquito, flies, cockroaches, उनकी जो देखने की जो पावर है that is bit different. They are actually having different types of eyes called compound eyes. Means small pieces of lenses that are combined together and that eyes can rotate in all the direction. So जब ये insect को पीछे देखना होता है, they don't have to turn their head, just by turning their eyes, और क्योंकि वो चारों तरफ से देख सकती है, so they will get the image who is coming from the back. That's why it will be really tough for us to catch a mosquito or catch a housefly. कभी जब हमें ज़्यादा परेशान करती, we want to kill that with the help of something, or we want to hold flies, we are actually not able to catch them, क्योंकि वो they get the sense that someone is coming and they used to fly away from that. So these insects like housefly, mosquito, butterfly, cockroach, they all are having compound eyes जो सारी direction में देख सकते हैं. The next point that is explained in the chapter is about noise. A band was passing from the Raju's house, जिसमें बहुत सारे songs बज रहे थे that are very loud voice. So Raju was getting irritated. He told Munia that it's a big noise. So then Munia asked, what is noise? Then Raju explained him कि noise is a sound, the level is more than our capacity of hearing. Means ऐसा sound जो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज होता है. वी आर नॉट एबल टू हियर दैट, एंड व्हेन वी हियर वी फील इरिटेटेड, वी विल गेट हेडेक फ्रॉम दैट एंड वी डोंट फील कंफर्टेबल. तो जनरली हमारे जो ईयर्स होते हैं, वी आर एबल टू हियर अ पर्टिकुलर साउंड. उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज, उतना ही हम सुन सकते हैं. अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी, वी आर नॉट एबल टू हियर इट. तो ये जो तेज साउंड होता है, दिस इज कॉल्ड नॉइज एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. We used to see different types of animals just around us. Out of that, lizard, frog, these are common. Snake भी during rainy season we used to observe rare. लेकिन क्या रीज़न है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं, ये हमें एक पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं. लिजर्ड स्टिल यू विल गेट थ्रू आउट द ईयर, बट मोर विल बी ड्यूरिंग रेनी सीजन. स्नेक आपको रेनी सीजन में ज़्यादा दिखते हैं. यू यूज टू रीड इन द न्यूज़ कि आज इस जगह पर स्नेक निकला है, आज इधर. तो क्या रीज़न है कि रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं. फ्रॉग इज ऑल्सो कम्स आउट ड्यूरिंग रेनी सीजन. तो हर एनिमल का अपना एक सीजन होता है जिसमें वो ज़्यादा विजिबल रहते हैं. एक्चुअली सॉइल, स्नेक यूज टू लिव इनसाइड द सॉइल एंड व्हेन दैट सॉइल इज फुल विद वाटर, इट यूज टू कम आउट. फ्रॉग जो है
they used to lay eggs in water. So during rainy season when water is filled, these used to lay eggs. And the same thing कि जिस जगह पे वो रहते हैं, the soil is full with water, so usually these are seen more during that season. All animals, they are having their own characteristics. We cannot be similar to birds, we cannot be similar to aquatic animals because we are terrestrial. हम पानी में रह नहीं सकते हैं. We cannot fly like a bird. Actually मुनिया राजू को पूछती है, can I swim like a fish or can I live in the water? Actually swimming we can do but we cannot live in water क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे में लंग्स होते हैं, सो वी आर एबल टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर. बट फिशेज, दे आर एबल टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, सो एबल टू सर्वाइव इन इट. एंड वी कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड क्योंकि बर्ड में फ्लाई करने के लिए दे आर हैविंग फेदर्स एंड विंग्स, बट वी आर लैक विद ऑल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. So all animals, they are having own characteristics that help them to survive in a better way. Ant is one of the common animal or insect that is visible to us so many times a day. Actually, they used to make their house in the soil, in the trunk of the trees, और under the pot also they used to live. जहाँ पे गर्मी कम होती है, they get cooling over there. Usually ant, they used to live in a colony. It means they used to show a social behavior. तो वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहती है. Types in a colony, there are 3 different types of ant used to live. These 3 types of ants are queen ant, उसका काम होता है laying eggs, worker ant taking care of the eggs, and soldier ant to safeguard the eggs in their home, उनका ध्यान रखना. Usually when ants used to move from one place to another one, अगर उन्होंने eggs ले किए होते हैं, then they move with their eggs. तभी कभी अगर आप ant को मूव करते हुए देखोगे, you will see a white substance with that. So that white thing is actually the eggs. And always ants move in a row. वो एक दूसरे को फॉलो करती है. हाउ आर दे एबल टू फॉलो ईच अदर? बिकॉज वॉट एवर एंड्स दैट यूज टू मूव, दे रिलीज अ सब्सटेंस बिहाइंड. और केमिकल को वो रिलीज करती है, और उस केमिकल को रिकॉग्नाइज करके या आइडेंटिफाई करके जो दूसरी पीछे वाली एंट्स है वो इजीली उस पाथ को फॉलो कर सकती है. सो इट सीम्स टू बी दैट दे आर मूविंग इन अ रो. नेक्स्ट, व्हेन एन एंट बाइट अस, then that particular portion will swell and we feel burning sensation over there. तो उसका क्या रीज़न है कि जब एंट हमें बाइट करती है, इट रिलीजेज अ पॉइजनस सब्सटेंस, और उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड. तो वो जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, बिकॉज इट्स एन एसिड, तो वो हमें बर्निंग देता है. एंड वी फील पेन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टिंग ऑफ द एंट. And ants always live in a group and they are having their own world and colony. Our traditions teach us that we should make the availability of food for all the creatures. मतलब जितना possible होता है हमें अलग अलग creature के लिए food available करना होता है. For example, you have seen that your mother used to feed cow a chapati. Dog को हम देते हैं milk और चपाती. Then during श्राद्ध we used to give खीर and पूरी to the crow. उसके अलावा कुछ आप में से कुछ ने देखा होगा कि आपकी मम्मी या दादी, they used to take some roasted flour, roasted wheat flour, सिका हुआ गेहूं का आटा, उस पर थोड़ा सा घी और शक्कर मिलाकर दे यूज टू स्प्रेड समवेयर एट पर्टिकुलर प्लेसेस. तो ऐसा करके वो किसको फूड अवेलेबल करवा रही है? शी विल मेक इट फॉर द एंड्स. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर ट्रेडिशंस कि जितना हो सके हमें इन सारे क्रिएचर्स के लिए खाना अवेलेबल करना है. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट. समटाइम्स व्हेन वी सी अ ग्रुप ऑफ एंड्स समवेयर, जो कि हमें कभी कभी डिस्टर्ब भी कर देता है. सो व्हाट डू वी यूज टू रिमूव दैट एंड्स फ्रॉम देयर? हम एक्चुअली थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं
और वी कैन स्प्रिंकल टर्मरिक पाउडर और सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक की हल्दी को पानी में मिलाकर उसको वहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं. सो बाय द इफेक्ट ऑफ टर्मरिक एंड salt, ants will move away from that place. Nowadays insecticides are also that also used to come, तो हम वो स्प्रे करके भी उसे वहाँ से हटा सकते हैं. बट एक्चुअली इन दैट कंडीशन व्हेन वी यूज इंसेक्टिसाइड्स ants will die, and with that chemicals are harmful for us also. So better to use such kind of salt and turmeric, so that is better for them also and for us also.